Thank you to everyone joining us on Google Meet and YouTube from all across Pakistan. Tonight, we're tackling a major hurdle every AI builder faces, moving past the prototype stage. We all know the frustration of a model that runs perfectly in a Jupyter notebook, but breaks the second it hits production. That's why tonight's session is titled Beyond AI Demos Building Intelligent Systems That Actually Work. We're super honored to have Rahil Siddiqui with us. Rahil is the CTO at Loopless AI and has real industry experience shipping AI systems that handle real users, real data, and real failures. Today, he'll break down three things for us. First, how to deploy AI systems that actually work in production. Second, how to move from demo code to production ready solutions. Finally, key principles for building reliable, scalable, intelligent applications. Let's give a big virtual welcome to Rahil Siddiqui. Rahil, over to you. The floor is all yours. Hey, hello everyone. Can someone let me know if I'm audible to you guys? Yes, you are audible. Perfect, perfect. Okay. Hello everyone. I'm Raheel. I'm co-founder and CTO at Loopless AI. We have an agentic AI operating system into real estate for the US market, and I've been building products for a while now. I used to work as a software engineer for past more than 5 years, and then last year I got into product building, uh, and I had a chance to get an early exit from a product, so I was able to sell my product and then travel for a while. And later I found out I cannot go back to working 9 to 5, so I started building more products. Other than that, I am into tech communities like Google, GitHub, AWS. If you see any event happening in Karachi, mostly in Karachi, I would be there, probably. But yeah, that's about me. I'm a huge open source enthusiast, and I love exploring good technical projects and uh, and contributing to it. Other than that, about today's talk, we're gonna talk about AI, obviously. Everyone is doing that, and the reason for that is AI is everywhere. Probably you guys have been using it. I don't know. मैं किसको अभी like can we have like some sort of interaction on chat? I don't know if we have that. कोई भी जो Yes, team chat में is से available for everyone. okay, just let me check how can I see people typing something. अच्छा, आप में से पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से कौन-कौन स्टूडेंट है, जस्ट लाइक चैट में बता दें कि ओके आई एम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेशनल। Hmm, okay, I can see chat. Student. Perfect. So mostly आज हमारे पास majorly students हैं और every one of you is a student of Ziauddin University. Hmm. Okay, so we have IOBM as well, Ziauddin as well. So it's like kind of mix of the people here. Perfect, perfect. And just let me know, have you guys been using ChatGPT, Gemini? अपने किसी project में use कर रहे हैं? Assignments बनाने में, कुछ भी करने में? Okay, we have like from everywhere, IOBM, MGT. Perfect. Which tool you guys have been using? Claude, ChatGPT, Gemini?
because I'm trying to understand. Okay, all three perfect. I am trying to understand because I graduated back in 2022, and at that time कोई GPT Gemini वगैरह कुछ भी नहीं था. और as soon as I graduated, like मेरा जब FIP का defense था, like I got out, I went to home, and the next day ChatGPT was released. And when I tried it, I was so frustrated क्योंकि मैंने कुछ 6 महीने लगा के अपनी FIP की रिपोर्ट बनाई थी. And it was just like the time I got into it and I fell in love with building things with AI. I was like probably one of the early users of ChatGPT, Cursor, and everyone. I was using Cursor in the beta environment as well. So I've been into it right now. I use Claude Code probably 10 hours a day. Whenever I'm out with my friends, I keep using it on my phone. I just connect my laptop server to it, and then I just like keep chatting with it and building things. It's so easy to build everything right now. So, but while building things, everyone is so accessible right now. We had to make sure what to build and how can you build it, how secure it is. Today we are not gonna like get into coding part और मैं कोई आपको deployment ऐसे AWS पे या GCP पे कुछ करके नहीं दिखाऊंगा. What we're gonna do, we're gonna just like have a very fun discussion around how there are products and how big companies made those products and failed and wasted billions of dollars. And it's kind of frustrating to me as well this all happened and it's so good to see like I was just checking like a post on LinkedIn today as well. A company, it's a unicorn company right now. I think it's called Pluto AI or some AI. It's only there is one person can build a company which is worth $1 billion right now. Can you imagine that? I mean, it's so easy to build products. And I actually built another product like in past week. I just turned 25 last Sunday, and I have this ritual to make like just code 2 3 days in a week of my birthday. So I built like a product this time, and I just shared with bunch of people on Twitter, Reddit, or LinkedIn, and I would actually show you guys how it feels like to just like birth something out of your own, and just to see how people are like interacting with it and using it. Okay. Okay. I'm just gonna share my screen and probably we're gonna wait. Can you guys see my screen? Perfect, perfect. अच्छा बीच में कभी भी मेरी आवाज लैग हो कुछ भी हो तो just let me know because I cannot hear anyone. I cannot talk to anyone. So just maybe be responsive in chat, ask questions, whatever you want to discuss. Just chat में आप message कर देना सही है. Uh, so okay. Just by the way, like this all presentation is also generated by AI. I I researched on some content on the internet and the companies that I was looking forward to and the examples that I wanted to show you, and then I gave it all to Claude. Okay. और फिर उसने मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दिया. उसके बाद I gave it to Claude Design and it made me this presentation probably in like 5 minutes. Like अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे मेरे साइड में prompt है. And this is like my Claude Design. I design everything with Claude Design now. So first of all, beyond AI demos, so the thing is now everything is so simple to build. Uh, Everyone is building things. Can you guys tell me like if you guys are working on some side projects or university project, कोई भी like one liner idea आप मुझे बता दो chat में कि like what you guys are working on, like whatever cool, if you have built something which is cool, अगर उसको आपने deploy किया हुआ है कहीं URL पे वर्सल का या फिर कोई production URL, वो भी share कर दो. इस meeting में I think अभी कोई 20 से ज़्यादा लोग हो गए. So everyone can just check it out, or also अगर कोई idea भी है what you want to build as well after this session, you can also discuss it. Okay,
whatever you're building, कोई साइड प्रोजेक्ट हो, कोई भी अपना FIP पे काम कर रहे हो, या फिर कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो, so just share it in the chat. We can just like discuss it later. So right now everything is very very simple. Perfect. So everything is very simple right now because you can build like I know myself. I haven't coded. I think in more like year. एक साल तो मुझे हो गया है कि मैंने कोई जाके VS कोड में कुछ चीज मैंने फिक्स की हो, या फिर मैं आई कैन लुक एट द कोड, मैं उसमें कोड को समझ लेता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट everything that I code is by Opus. It used to be Sonnet. Now it's mostly Opus 4.8, Cloud Code, or I've been trying Codex as well, जो ChatGPT का tool है. But I can like guarantee मैंने एक साल से ज्यादा हो गया मैंने personally कोड जाके जो पहले होता था कि मेथड्स लिखना है वो नहीं लिखा है. But at the same time I gave my time when I was in university. I cleared my programming fundamentals, object oriented, data structure, all these courses. That's how I'm able to communicate with AI and make it build products. Okay, but now the bigger challenge is कि हर कोई अब product build कर रहा है. Like you can build anything, I think, in 1 or 2 days. Okay, but the thing is how to build it, what to take care of, और किस तरह की products build की जाए, हम इसके बारे में बात करेंगे आज, by the way. So, uh, so the thing is, whatever you are building, like, make sure it's just not a demo. It's a product which is solving a problem and can be used by real people in the world. It can be solving some sort of booking, some sort of pain that you have. For example, I was yesterday or maybe on Sunday, I was in a hackathon by Google, and one of the team they built like a system which can help you book paddle courts or cricket courts or futsal courts. Okay, which is like a problem. Or आप उस app के ऊपर you can find someone to play with as well. So this is like a real problem that I face as well, and it was actually good, to be honest. And they built it, they vibe coded it, but the thing is they had real problem solving skills, so they built it. So first of all, whatever you're building, build it for the people, not just demos. सही है, उसमें कोई कुछ problem solve होनी चाहिए. uh yeah, that's the same thing. So अभी भी जो 95% enterprises होते हैं, वो लोग जितने भी products build कर रहे होते हैं, उनका ना बिजनेस के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होता है. आई डोंट नो, लाइक आई फ्रॉम द टीम आई वुड रिक्वेस्ट समवन कि मेरे पास ना ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है एडमिट करने के. आई डोंट नो इफ यू कैन टर्न इट ऑफ बिकॉज जस्ट लाइक बगिंग मी, कि मेरे पास टोन करके आवाज आती है बार बार ना. सो इफ यू गाइस कैन जस्ट टर्न इट ऑफ फॉर मी, दैट वुड बी ग्रेट. बट या बैक टू इट. अब जितने भी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक, Meta, Netflix, and all these companies have been building huge products and they have been investing billions of dollars. आप में से किसको NFT का पता है? NFT का किस किसको पता है? Like just share it in chat. I know. Okay, perfect. You can raise hand as well. So you guys know about NFTs, you guys know about metaverse. 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि मेटा ने पूरे अपना एक मेटावर्स बनाया था जिसके अंदर यू कैन बाय एनएफटीज, यू कैन बाय प्लॉट्स इन द मेटावर्स एज वेल. लोग प्रॉपर्टीज बना रहे थे, देयर वर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो कि एक एप का एनएफटी खरीदते थे और उस पर ट्विटर पे जाकर अपनी डीपी लगा लेते थे, राइट? Meta invested like billions, I think more than $70 billion into that project, and they just shut it down right now because they are just focusing on the AI part. And the same thing happened with like bunch of companies. गूगल का बार्ट था, जब जेमिनाई से पहले जो टूल आया था वो बार्ट था, उसके अंदर इन्होंने $100 billion अपने वेस्ट कर दिए थे. सही है, क्योंकि वो करेक्ट रिस्पॉन्स करता ही नहीं था और उसने एक
जेम्स वेब टेलीस्कोप करके एक रिसर्च पेपर था, उसके ऊपर गलत आंसर दे दिया था, एंड देन उनके शेयर मार्केट में $100 बिलियन वाइप आउट हो गए थे। एयर कनाडा का एक कस्टमर सपोर्ट की ऐप थी, सही है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, और विच which they had to honor it, and they had a major setback because of it. उसके बाद एक $1 शेवी एक बहुत फेमस हुई थी एआई वर्ल्ड में चीज, which was like prankster used two sentence to make dealership bought, and उसने एग्री करवा लिया था to sell $76,000 टाहो for $1, सही है, और उस $1 से तो $76,000 की चीज खरीदनी थी, क्योंकि उसने सेल्स बॉट से बात कर ली थी। ओके, एंड मैकडोनल्ड्स का भी एक यही केस हुआ था कि उन्होंने अपना चैट बॉट में लगाया यू कैन ऑर्डर्स फ्रॉम लाइक एआई चैट बॉट, और उनको भी बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था। और फिर न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल चैट बॉट लॉन्च किया था, जिसमें बिजनेस द सिटीज business bot told owners they could take worker steps and refuse section 8 tenants, both illegal, ये दोनों चीजें लीगल थी। uh, और इसको डॉट गवर्नमेंट बैच इन्होंने रख दिया था, और उसको बहुत ज्यादा डेंजरसली कंसिडर किया गया था, एंड इट यूज्ड टू गिव लाइक wrong answers the chatbot as well। और एक like there was like a huge case uh, in which a chat GPT invented 6 fake cases, the lawyers were fined $5,000, और वो ट्रू भी नहीं था, सही है। But these were all the failures by like huge companies। ये सारी companies को हम admire करते हैं, अगर यहाँ से हमें job offers आ जाए तो we would go there। Everyone is just like investing billions and billions of dollars in these companies, and these companies have been making mistakes, right? But the thing is, what actually works? जो ये सारी प्रॉब्लम होती थी ना, वो में क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी 2022 में, 23 में, व्हेन एआई जेन एआई वाज लाइक वेरी अर्ली, जब कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग का ना बहुत मसला होता था, सो मॉडल यूज्ड टू बी वेरी वेरी डम, एंड देयर वर लाइक लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच केम। अगर किसी ने सूट्स एक टीवी शो है, किसी ने देखा है, लाइक यू कैन जस्ट टेल इट इन द चैट और थम्स अप और व्हाटएवर। उसमें एक करेक्टर होता है हार्वी स्पेक्टर, उसके नाम के ऊपर हार्वी एक प्रोडक्ट आई थी जो एक लॉ फर्म ने लॉन्च की थी, एंड देन इट वाज फॉर लॉयर्स, एंड व्हाट इट यूज्ड टू डू, इट यूज्ड टू जस्ट लाइक गिव सोर्सेज of whatever legal you want to ask, okay? And same with perplexity, everyone was using perplexity like 2 years ago, because it used to give you sources, and it used to search on the internet whatever you wanted to ask, okay? uh the thing is, whatever you're building, you need to like, if you're building something with AI, if you're researching about something, you need to think AI can be wrong, और उसको अटैक किया जा सकता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अटैक्स व्हिच यू कैन डू। प्रॉम्प्ट फिशिंग होता है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है। happened to me, I'm going to show you like one of the example as well, we're going to like use that one platform as well if you guys are for it, but happened to me, it happens to everyone, and the thing is, the bigger concern right now is the security part of LLMs, जो भी अब प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने आते हैं कि uh, people are not able to monitor it, because everyone who is not a tech person is building product right now, but they don't know how to secure these products. That's why there's like lots of attacks on these products as well. uh, the solution for it can be, there is like one terminology, it's a very famous terminology, there's like a term, it's called human in loop. So most of the emphasis in the startup ecosystem is to have human in loop in your AI product, which can approve things. For example, AI can handle your data, AI can research on your data, AI can make decisions on your data, but the thing is there should be a human which needs to approve it. अगर आप अभी कर्सर
क्लॉड या चैट जीपीटी या फिर कोडेक्स कुछ भी यूज करते हैं कोड जनरेट करने के लिए, it has a plan feature as well. Plan mode में आप जाके it gives you a plan and then you have to approve it कि भाई इसको build करो and then it keeps asking you multiple questions कि अच्छा मैं इसमें ये कर दूँ. If you don't know anything about this domain, if you don't know anything about coding, you would be like हाँ कर दो और वो बाद में ना बहुत बड़ा fuck up कर देता है, right? And the thing is, there should be human involved right now until we have achieved that level. There is always gonna be human involved. I'm gonna show you guys an example as well in future. मॉडल जितने भी होते हैं सही है, दे डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन। आप किसी मॉडल से प्रॉम्प्ट करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का भी कॉस्ट कर सकते हो उस मॉडल को ना। आप मॉडल की कॉस्ट बढ़ा सकते हो, आपको नहीं पता कि आपके जो यूजर्स हैं वो फेक हैं वो रियल है, वो आपका मे भी सिर्फ टोकन यूजेज बढ़ा रहे हो, सही है। सो यू नीड टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर एवरीथिंग what you have been implementing. There are tools to monitor your token, your usage. देखें ये लॉग कॉस्ट होती है, लेटेंसी कॉस्ट होती है, क्वालिटी होती है, इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा डोमेन आ गया है एलएलएम्स में। whenever like there are now evaluation engineers which actually evaluate your product uh token usage, okay? Hallucination का हो रहा है, there is like one of really good project which is called D people I use and which works fine for it. Uh, so जो जो भी लोग AI यूज कर रहे हैं, there are lots of product which you can use. Like one of them I use is GitHub Copilot as well. Every product has AI integrated. Uh, but the thing is, they need to build a trust on top of it. They need to set out the privacy concern. They need to set out the security for it. Like right now, I released like one product last week, and most of the users who wanted to use that product were like, "Oh, are you using our data to train an AI model? Are you using our data to make decisions? Are you using our data to just share it to sell it to someone?" So there's like a huge concern now. So mainly अब जितने products बन रहे हैं, every uh, product has some sort of same skeleton. It's like whenever you give it a prompt, कि like imagine you're building a product. अभी किसी ने comment में कहा था कि churn calculate करने का product बना रहे हैं, सही है। But the thing is उस product से कोई जाके I don't know some sort of music related questions कर ले, would it be able to answer it? You need to verify whatever your user is asking to your product. Now what people do, they add checks, they add guardrails to validate the input from the user कि भाई जो user अब पूछ भी रहा है, does it make sense or not? Is it from the same domain that we are operating it or not? जो उसका scope limit कर देता है, सही है। And as soon when you limit the scope, और उसके फिर कॉन्फिडेंस आप एक डेवलप करते हो कि द यूजर which is coming in, which is using my product is actually a real user and they are not just messing around with my product. And you need to monitor everything with it as well. uh yep. I mean, this is like the same thing that we discuss, but the thing is like whatever you can build with it, uh like make sure, like I received a message 2 days ago from someone on LinkedIn, and it was like a student from some university, and then he was mostly like what whenever I build a product, I just build it, I don't polish it. Like right now it's very easy to build products, right? But the thing is you need to include authentication layer, like Google sign up आप डालो product में, और उसके अंदर अगर वो कुछ पेड फीचर्स हैं उसमें कोई स्ट्राइप इंटीग्रेट करो, कोई पेड गेटवे इंटीग्रेट करो, जस्ट टू मेक इट प्रोडक्शन रेडी। Yes, अभी तक किसी का कोई questions है? Because like this is like these were all the things that I had to discuss. Now I'm gonna just show you guys some of the things that I built and probably like it's just like fun products which I have been building.
and I built for like one of the workshop that I conducted for Google. And I'm gonna show you like some sort of yeah, real world scenarios which happened to me as well. Yep. Anyone here? कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो, you can just ask. Share it in the chat, और मे बी आप माइक खोल के भी बता सकते हैं. Everything all right? Perfect. Fahad ने जो क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, आई एम गोना मूव इट टुवर्ड्स दैट आफ्टर दिस. अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता और कोई, क्योंकि मैंने नेक्स्ट सेशन में यही कंक्लूड करना है. हाउ डू आई बिल्ड प्रोडक्ट्स? ओके, मैंने अपना प्रोसेस बताना है. ओके देन एवरीवन इज फाइन. अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? मैंने थिंग स्टॉप कर दी थी. Just let me know if you guys can see my screen now. Can you? कोई मुझे टीम में से बता दे कि मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है तो. Your screen is not visible. Okay, this is very good. This and that. Perfect. Okay. Wait. Sure. अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Okay. So right now I have a very, very simple process. Okay. So building product is really easy. Okay. I mean, this is like very good question by Ifra. परफेक्ट. मैं पहले अपना प्रोसेस बता देता हूँ जो फहद ने क्वेश्चन पूछा था, एंड देन इफरा मैं फिर आपका आंसर कर दूंगा. So the thing is, now it's very easy to build products. What I do, what I personally do, whatever idea I have, I sit on it, I think about it. If, like, for example, if there is an idea which I want to make for myself, okay, because there are like few ideas I had which I really wanted to code, which I really wanted to develop just for myself. And with AI, I was able to do it in like couple of days. One of them is my portfolio website. So this is like I am a big nerd. I watch lots of movies. I watch lots of TV shows. एंड बचपन में हमारे घर पे एक छोटा सा सोनी का टीवी था जो कि काइंड ऑफ सिमिलर दिखता था. एंड आई लाइक व्हेनेवर आई सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बाय अदर डेव्स, तो वो ना काफ़ी बोरिंग होती हैं. वो लाइक अबाउट का पेज आ गया, उसमें आर्टिकल्स आ गए और अपना बता दिया, गिटहब का यूआरएल आ गया. सो आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग, क्योंकि अब नाउ बिल्डिंग थिंग्स इज वेरी इजी. नाउ यू हैव टू बिल्ड समथिंग विद द फ्लेवर दैट यू कैन प्रोवाइड. ओके, so I wanted to build like a CRT television. This is a Sony Trinitron एक मॉडल होता था सोनी का टीवी का, which I wanted to build for as my portfolio side. Like you guys can also access it at railsiddiqui.com. So it's just like a TV. You can switch it off, switch it on. और इससे आप चैनल्स चेंज करते हो, सो इट चेंजेस. वो जो अबाउट का आर्टिकल्स का जो सेक्शन होता है ना, यू कैन चेंज इट. जैसे अब इस पेज के ऊपर इस चैनल पे मेरा सारा पुराना एक्सपीरियंस आ रहा है जिन कंपनी में मैंने काम किया हुआ है. ओके, और यहाँ पर मेरे जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है वो आ रहे हैं. अदर देन दैट यहाँ सारे मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं. आई कैन जस्ट गो ऑन वन ऑफ देम एंड देन क्लिक, और वो मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा. सही है. Or I used to produce music as well.
सो आई एडेड लाइक सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक प्लेयर। ये इसमें आप गाना प्ले करोगे ना तो प्ले भी होता है, क्योंकि आई थिंक मैंने अभी अपने टैब में इनेबल नहीं किया हुआ था म्यूजिक, बट यू गाइस कैन जस्ट गो देयर, चेंज द चैनल और ये प्ले भी कर सकते हैं गाने। इसमें मैंने 2-3 गाने डाले हुए हैं जो मैं सुन रहा हूँ आजकल। बट लाइक यू कैन ऑल्सो प्ले फ्रॉम हियर। अभी मैंने एक एआई चैट बॉट डाला हुआ है, सही है यहाँ पर। लाइक यू कैन जस्ट आस्क अबाउट मी टू इट, हु इज राहील। और यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं, लाइक इफ यू आस्क अबाउट माय कंपनी is loopless AI. So it maintains like a context, or like imagine if you are a student and you have this type of portfolio and someone is hiring you. Like if you are hiring someone, if you see this type of portfolio about someone, you would be really, really impressed. Okay. But it's just like I generated it with the help of AI. ये मैंने भी Claude design से ही इसका design generate किया था. Okay, I had the process that I have is very simple. Whatever I want to build, I go on Claude. मैं उसको पहले उसके रिसर्च करता हूँ कि भाई ये इसमें क्या क्या चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ इसका। अगर मैंने ये सिर्फ मेरा एक साइड प्रोजेक्ट था जो मेरे अपने लिए बनाना था, इसमें कोई रिसर्च मुझे चाहिए नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि यार मैंने ये बनाना है, इसमें मैं क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूँ। तो क्लाउड ने मुझे बोला क्या ये फीचर्स ऐड करते हो। मैंने बोला मुझे इसको ना प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो जो मैं क्लाउड डिजाइन को दे सकूँ। सही है। सो दिस इज लाइक फर्स्ट स्टेप, गोइंग टू चैट जीपीटी और क्लाउड और जेमिनी। आइडिएशन फेस है ये, आपने आइडिया अपना जाना है, उसको देना है, उसको बोलो कि मैं इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूँ। सो यू रिसर्च अबाउट इट, यू टेल इट कि भाई मैं क्लाउड डिजाइन से इसको डिजाइन करवाना चाहता हूँ। उसको प्रॉम्प्ट से आपने लिया, उसको बोलो इसका प्रॉम्प्ट बना दो, एंड देन यू गो टू क्लाउड डिजाइन। आप क्लाउड डिजाइन पे उस मैं लिटरली एक बात भी नहीं करता उससे, जस्ट गो देयर, आई पेस्ट इट, और मैं बस एंटर करके आई जस्ट स्क्रॉल रील्स। ओके, मेरे पास डिजाइन करके दे देता है क्लाउड डिजाइन। मेरे पास डिजाइन आता है लाइक दिस। अगर जैसे एक प्रोडक्ट का डिजाइन है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ और वो एक्सपोर्ट होके क्लाउड कोड पे एक्सपोर्ट हो जाता है क्लाउड डिजाइन से ना। एंड देन आई जस्ट टेल इट हाउ टू बिल्ड इट, व्हाट टेक्नोलॉजीज टू यूज, बिकॉज इट्स गोना यूज एनीथिंग। मैंने इसको खुद बताया था कि इसमें नेक्स्ट जेएस यूज करो, एक टेलविंड की लाइब्रेरी होती है यूज करो, शायद सी एन यूज करो, एंड ऑल दैट। एंड यू हैव टू लाइक गाइड इट थ्रूली ताकि बिल्ड कर दे। फिर मैंने वर्सल टूल कॉलिंग होती है, सो टूल कनेक्ट किया वर्सल का, एंड देन इट जस्ट डिप्लॉयड इन वर्सल। मैंने डोमेन मेरे पास ऑलरेडी था अपने नाम का, सो मैप कर दिया। सो देयर इज लाइक 3 स्टेप्स। वन, आइडिएशन, आइडिया आपने वैलिडेट कर लिया। वैलिडेट करना आइडिया जब आपको जरूरी है, जब इफ यू आर बिल्डिंग इट फॉर द यूजर्स। जैसे आपने कोई ऐप बनानी है जो जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप बना रहे हो, आप सही कैलोरी ट्रैकिंग ऐप कुछ बना रहे हो, तो आपने उसके लिए अपने यूजर्स के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू कैन आल्सो डू इन क्लाउड। ओके, वो आपने जब सब कर लिए, फीचर्स आपने डिसाइड कर लिए, यू जस्ट गो गिव इट टू क्लाउड डिजाइन। आपके पास प्रोटोटाइप आ जाएगा। प्रोटोटाइप आपको सही लग रहा है, आप उसको अपनी डिजाइन थीम बोलो। आप यू कैन एक्चुअली जस्ट गिव इट स्क्रीनशॉट्स के आपको कोई इंस्पायरिंग डिजाइन लगाओ, आपने उससे कलर स्कीम बता दी, एंड देन यू कैन जस्ट गिव इट। ओके, और उसके बाद इट्स गोना डिजाइन इट फॉर यू, एंड फिर उसके बाद यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट। सिर्फ ये एक एक क्लिक का काम होता है, सही है। क्लाउड को ये, और ये मैं आपको लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं आप लोगों को ये सब चीजें दिखाऊं कैसे हो रहा है, बट द थिंग इज it's just like one click away. Everyone is smart enough to do it. It's just like very, very understandable. If you just want to like learn how to set it up, you can just go on YouTube. आप कोई 5 मिनट की वीडियो देख लोगे ना, you can understand it. The reason that I wanted to mention all these things into this session is कि मैं इसका एक use case बता रहा था। Okay, so like the thing is कि I developed it. This is like some sort of idea which I wanted to build for myself. But other than that, I was hosting a workshop for Google at a university, DHSF, तो physical event था. I was there. There were like bunch of people, and my aim was like they told me कि आपको ना बस आके Gemini का दिखाना है कि Gemini CLI कैसे यूज कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटी कैसे यूज कर सकता है। बट इट्स लाइक वेरी बोरिंग, क्योंकि मैंने भी ये सारे सेशंस अटेंड किए एज ए स्टूडेंट, और जब कोई यूनिवर्सिटी वाले बुलाते थे ना कोई भी ऐसा बंदा, तो और वो कोड सिखा रहे कि ऐसे फंक्शन बनाओ, ऐसे लूप चलाओ, ऐसे करो, मुझे बहुत बोरिंग लगता था वो। सो आई ट्राई टू शो एज मच as projects that I can show in my
talks, in my sessions. So for those guys, I just build a very, very fun app. Okay. I think most of us are sort of Gen Zs, or probably आप में से कोई Gen Alpha भी होंगे, सही है? And everyone has brain rot Instagram reels onto them. Okay. Uh, the thing is, so this is like a concept that I had. One of my cousin, like he's just like, I don't know, 11-year old. और वो लोग आपस में बात कर लेते कि यार ये तो तुमने बड़ी एक बात कर दी है. It's a slay queen and all that shit. And they were just talking like that, and then I asked them, okay, what is it? Okay. And I got to know, so there's like a whole concept, like the sort of things that you say. You can get an egg from someone, you can get a slay from someone. So I was like, why not just build like an app around it? I'm going to share it with you guys as well. So what you guys need to do? Okay. It's a very fun thing, by the way. अच्छा, अब यहाँ चैट कहाँ चली गई? Oh my god, चैट कहाँ है यहाँ पर? अच्छा, कोई चैट में मैसेज करे, वो फिर मेरे पास ना पॉप अप हो जाता है. आई कैन जस्ट गो इनटू इट. मुझे अभी चैट नहीं मिल रही है. कैन एनीवन मैसेज इन द चैट? ओके, परफेक्ट. सो ये रहा लिंक. सो यू गाइस कैन ओपन इट एज वेल. मैं जब तक पानी पी लेता. ओके, किसी के पास ओपन हुआ है यूआरएल क्या? Perfect. So the thing is, the point of this project, it was a very dumb project. No real user, no one's gonna pay for it, but it's a very fun project. Imagine if someone is building it in a workshop for me, I would be very excited for it. Okay. That's why I built it. So what you can do is you can just go to this like uh यहाँ पर एक ड्रॉप है स्टेटमेंट का बटन है. आप इस प्लेटफॉर्म पर जाते हो, आप स्टेटमेंट डालते हो कि भाई matcha is performative. सही है. माचा पीने वाले परफॉर्मेटिव लोग होते हैं. और मैंने यहाँ पर बस कोई भी स्टेटमेंट मैंने ऐड कर दिया. नाउ इसमें मैंने एआई एक लगाया हुआ है जो कि जज करता है. आई होप मैंने वो एपीआई की डिसेबल ना की हो. ओके, परफेक्ट. नहीं हुई. सो द थिंग इज, यू जस्ट सबमिट स्टेटमेंट, और इसमें एआई डिसाइड करता है कि ये स्टेटमेंट एक है और स्ले है. सो दिस वन इज अ स्ले. एआई ने बोला कि भाई बड़ी स्ले स्टेटमेंट है. And the thing is, I have a leaderboard. So what we're gonna do, we're gonna like you guys are gonna submit X or Slay onto this platform, and then we have a X board and Slay board going on. So yeah, like whoever like submits most Slays can get in this X board. Sorry, Slay as आप करोगे submit तो Slay board में आ जाओगे. X submit करोगे तो एक board में आ जाओगे. सही है. And now here, जब तक आप ये submit करो, मैं आपको एक interesting story बताता हूँ. So आप लोगों को मैंने ये अभी प्रोजेक्ट दिया है. द थिंग इज, आई मेड इट फॉर फन. आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन एज वेल कि मैं गया वर्कशॉप में, मैंने बच्चों के लिए बनाया, एंड इट वाज क्वाइट फन. बट लिंक्डइन पे तो अब वो सबके लिए एक्सेसिबल हो गया, राइट? सो इट डजंट हैव एनी ऑथेंटिकेशन. इसमें ना यूजर को कोई गूगल से साइन अप नहीं करना पड़ रहा, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि एनी वन कैन जस्ट लाइक सबमिट एनी अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट. सही है. और यहाँ जो टेक्स्ट सबमिट हो रहा है ना, स्टेटमेंट जो सबमिट हो रही है, इसमें पहले कोई लिमिट भी नहीं लगी हुई थी कि आप ना यहाँ पर कोई भी लंबा सा कोई टेक्स्ट लिख सकते हो. बट द थिंग इज, इफ यू राइट डाउन कोई पूरा पैराग्राफ इसमें, आई एम यूजिंग एलएलएम, आई एम यूजिंग जेमिनी एपीआई की टू जज दैट. सही है. जितना बड़ा टेक्स्ट मेरे पास आएगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट मेरी एपीआई की बढ़ेगी, जेमिनी एपीआई की. तो किसी ने बॉट बनाया, उस बॉट से इसने कोई थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट कर दी इसमें सबमिट.
अब ये देख रहे हैं आप नीचे, फॉग ज्यूस। आई एम वेरी सपोर्टिव टू इट, बट द थिंग इज ये किसी ने बॉट चलाया है और उसने 20,000 स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, और ये मेरा ही नाम उसने रख दिया, सही है, यहाँ पे। और मेरे ही नाम उसने, क्योंकि मैंने ना ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, कुछ नहीं, उसने कोई तकरीबन 20,000 स्टेटमेंट सबमिट किए हैं। मेरी एपीआई 20,000 दफा कॉल हुई है, और मेरा कोई $50 का एपीआई का बिल बन गया था, जेमिनी एपीआई का, सही है। इट वॉज माई फॉल्ट। सो देन अब मैंने इसके अंदर सारी, अब कोई आप में से नहीं करके देखना, मैंने इसमें अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सो यू कैन नॉट सबमिट मोर देन आई थिंक 5 times और समथिंग लाइक दैट। बट ओके, कैफे the tea is fantastic. Oh, it rose to you as well, by the way. I mean, if someone submitted it, so then why are you just telling us if we need the receipts, not just the. So it's just like AI roast you onto it as well. Uh, Other than that, like yeah. So if you can see, कि इसमें से जो मैंने statement submit की थी वो slay थी, and all of these statements are like X, okay, and it's gonna like just judge it on top of it. But the thing is, what we have to learn from this, कि प्लीज हैव गार्ड, प्लीज हैव सिक्योरिटी ऑन टॉप ऑफ इट, कि अगर आप कोई भी ऐप ऐसी इन द जंगल डाल दोगे ना, लिंक्डइन या ट्विटर पे, समवन किसी के पास बहुत फारिग टाइम है जिसने ना आपके ऐप में आके आपका खर्चा बढ़ा देना है, एपीआई कॉस्ट बढ़ा देनी है, इसके अंदर इस बंदे को आप देख सकते हैं जिसने मेरा ही नाम से यूजर, क्योंकि उसमें कोई मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई हुई कि जैसे एंटर एनी नेम यू वांट, तो यहाँ पर उसने मेरा ही नाम लिखा है, और 20,000 स्टेटमेंट का बॉट बना के उसने लगा दिया है, और मेरा उसने खर्चा बढ़ा दिया एपीआई का। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट लर्निंग दैट आई हैड इनटू इट। ओके, सो दिस इज लाइक ऑल्सो दिस होल प्रोजेक्ट was built in probably 30-35 minutes, सही है। सेम प्रोसेस आई यूज्ड, आई वेंट टू क्लॉड, मैंने उसको बोला मेरे दिमाग में ये आइडिया, उसने मुझे आइडिया थोड़ा इम्प्रूव किया, मैंने वो आइडिया से प्रॉम्प्ट क्लॉड डिजाइन को दिया। क्लॉड डिजाइन जस्ट सिंपल, सही है, यहाँ पर जाओ, क्लॉड डिजाइन को दो, इट जनरेट्स इट, सही है, इट जनरेट्स योर डिजाइन, और क्लॉड फिर उसको एक्सपोर्ट करो क्लॉड पे, एंड बिल्ड इट, जस्ट बिल्ड इट, इट्स आउट देयर। दिस इज लाइक द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस। पहला मैंने ये दिखाया था कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपना, वेबसाइट जो बनाई थी। सेकंड एक और स्ले बनाया था। And like the company that I am building, Loopplus AI, the whole product is built on Claude. It has lots and lots of business logic into it, but it is built on Claude. I haven't wrote a single line by myself. It is coded by Claude as well. Okay. And like the thing is, but now it's very easy to build products. Wait, water break. So yes, uh, ये फिर इसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट बनाया कि सो द इट्स वेरी इजी टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, ओके, एवरीवन कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स। ये मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं आपको, मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा में बन सकते हैं, ये ना कोई भी बना सकता है। बट व्हाट इफ एवरीवन इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाउ यू कैन वैलिडेट इट, हाउ यू कैन टेल कि भाई ये यूजर्स को समझ भी आएगा। या फिर इफ यू वांट टू रेज फंडिंग, आई अप्लाइड टू वाईसी। वाईसी का किस किसको पता हुआ है, कॉम्बिनेटर का, एंटिलर का किस किसको पता है? एनीवन नोज अबाउट इट? ओके, मोइज, फहद knows about it. परफेक्ट। सो वाई सी किस जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वाई कॉम्बिनेटर, एंटलर, टेक्स्टार्स, स्पीड रन, दीज आर द इनक्यूबेटर्स जहाँ पर आप अपना आइडिया लेके जाते हो, आप सबमिट करते हो, एंड देन दे incubate you, they mentor you, and they give you money as well as an investor. So I applied for Loopless AI, मैंने और मेरे co-founder ने, रजा ने, हम दोनों ने अप्लाई किया वाई कॉम्बिनेटर में, और हम लोगों ने कोई 1 हफ्ता रिसर्च की कि भाई एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एंड देन वी एक्चुअली वांटेड टू वैलिडेट दैट आइडिया, कि हमने वैलिडेट करना था आइडिया कि बिकॉज your product can be really really good, but if you don't know how to pitch it, if you don't know how to sell it, it's a shit show, okay?
तो हमने ये देखना था कि हम कैसे अप्लाई करें वाईसी में कि हम एक रीजनेबल स्टार्टअप लगे. ओके. सो वी वर जस्ट रिसर्चिंग अबाउट इट एंड आई वाज लाइक व्हाई देयर इज नॉट अ प्रोडक्ट जो मुझे बता दे, मुझे स्कोर करके दे दे मेरे वाईसी की एप्लीकेशन. ओके. वेट. वाई कॉम्बिनेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ. एंटलर, स्पीड रन, पैकेट स्टार्स. There's like bunch of them. Okay. So the thing is, there was not a product for it. उस टाइम पे तो हमने जब बिल्कुल अप्लाई करना था कर दिया. बट मुझे ना एक महीने से वो चीज़ ना दिमाग में आई जा रही थी, why there is not a product to validate this on. सही है कि मैं कोई एक सा प्रोडक्ट होता जिसको मैं अपने स्टार्टअप का बताऊं और वो बता दे कि भाई वाईसी ना आपके स्टार्टअप में ये मांग रहा है और आपको ये एप्लीकेशन में इम्प्रूव करने हैं, आपके स्टार्टअप में ये होना चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एप्लीकेशन का. And it was my birthday last week, and I have this ritual to code something on my birthday, like just lock in for 2 3 days, and then I would not leave my room. I would just sit on my chair, or मैं बस code करूँगा, and I would just build something. Okay, so I was looking for something to build. Okay, then there was this I had this idea, so I thought, why not just build it? Okay. Oh, okay, Shayan. शयन हम इस सेशन में हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट्स विद एआई इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. बट द थिंग इज, सो दिस वाज माय आइडिया एंड आई डिड द सेम थिंग. आई वेंट टू क्लॉड और चैट जीपीटी. मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरा आइडिया है, आप इसको बताओ, इसको मैं इसमें क्या क्या फीचर ऐड करूं. तो चैट चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि आप अपना कोई भी स्टार्टअप आइडिया हो, आप चैट जीपीटी को भी तो डाल सकते हो, उसके प्रॉम्प्ट में डालो या फिर उसके जो इनपुट होता है डालो. बोलो कि मुझे बताओ कि इज इट गुड और नॉट. चैट जीपीटी को आपको आंसर कर सकता है. सो यू नीड टू कम अप विद अ वे के एलएलएम बेस्ड आंसर ना हो. सही है. लाइक डाटा बैक्ड आंसर्स हो जो भी आप जनरेट कर रहे हो. सो आई केम अप विद दिस प्लेटफॉर्म. ये वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को, ट्रक्स्ट जो मैं दिखा रहा हूँ. So I came up with this platform which is called Trust. Okay. So it tells you what it tells you simple thing. If your idea would get into YC, Y Combinator, yeah, speedrun, yeah, Antler. So yeah. Uh, so I built it, and the thing is, I sent it to someone after building it, and they were like, "Why should not I just like ask ChatGPT कि मेरा startup का idea है, वो इस में YC के लिए एलिजिबल है या नहीं है." सो देन आई केम अप विद समथिंग एल्स. अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ, एक काम मैं करता हूँ, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ ये. सो इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट यू कैन एज वेल. अच्छा, गेट स्टार्टेड, साइन इन. अब इसमें देखिए मैंने जो रियल यूजर्स के लिए बनाया ना, इसमें अब मैंने सारी ऑथेंटिकेशंस वगैरह रखी है कि गूगल से ऑथेंटिकेट होगा, और देयर इज लाइक सिक्योरिटी लेयर्स एज वेल. सो मैं, ये मेरी कंपनी लूपलेस है, मैं इसी का चेक कर रहा था, मैंने आइडियाज के अंदर डाला एंड देन आई वाज लाइक कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स कि ये 10 में मैट्रिक्स पे आया, 10 डायमेंशंस हैं ये, जिन बेसिस के ऊपर स्कोरिंग होती है प्रोडक्ट की ना आपके. सो वाई अब इसके अंदर हर तकरीबन जो फेमस इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर है इन प्रोग्राम्स की वैलिडेशन है. वाईसी का मेरा स्कोर 80 आ रहा है आउट ऑफ 100. स्पीड रन का 78 आ रहा है. एंटलर का आ रहा है 83. आर्क एक सेक्वा भी है, उसका है टेक स्टार्स. एंटरप्रेन्योर फर्स्ट का 79 स्कोर है मेरा. एंड इट्स नॉट जस्ट एन एपीआई कॉल. व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो टू देयर रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप पेज. ये हर इनक्यूबेटर, हर स्टार्टअप
accelerator एक page publish करता है where they mention what they're looking for in startups. Okay. And also they have like lots of podcasts जिसमें इनके partners बात कर रहे होते हैं what to focus on, like some sort of advices. I thought why not I just give that data to this product, और जो भी आप अगर अपना आइडिया वैलिडेट करना चाहते हैं, सो आपका जो आइडिया है वो कंपेयर होगा फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दीज पार्टनर्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर टेलिंग। बस सही है। अगर वो चाह रहे हैं कि इन चीज़ों पे फोकस करो तो आपका जो आइडिया है उनके रियल डाटा के ऊपर आंसर करेगा। सही है। सो दिस ऑल डाटा is not generated by LLM. It is compared what YC looks for, what speedrun looks for, and same thing. I built it in 3 days. Same flow, went to ChatGPT, Claude design, then Claude code, made it. Okay. अब जैसे मेरे जो स्टार्टअप है इसमें वाईसी की एप्लीकेशन में रेवेन्यू एंड ग्रोथ में काफ़ी कम स्कोर आ रहा है, डिमांड सिग्नल में काफ़ी कम स्कोर आ रहा है। So you can go to it and also it gives you like sources कि अगर इसने ये रिजल्ट दिया है तो इसने कौन से पार्टनर ने क्या बात की थी and what they think about your product. Okay. And yeah, that's what I built. It was like in 3 days and it's so easy to build it. It just like helps me validate my products, whatever I want to build. And it is following the same flow that I have been talking for like an hour. Go to any chat GPT, any Claude, Gemini, ideate your idea, go to design tool, design it. Probably if you're a designer, go to Figma. If you want to use Claude design it with it, just go to Claude Code. It's very easy to build products right now. And after that, you can just go on LinkedIn. Bunch of people are doing different tools. If you're solving a real world problem, people would love to use your product. And yeah, just share it on Reddit, Twitter. हम लोग काफी ना uh, हल्का लेते हैं ट्विटर और रेडिट को। there's like bunch of tech people on Twitter and Reddit which are very active more than LinkedIn, and we don't use it enough. I think everyone should use Twitter more collectively. But yeah, these were like all of my things that I wanted to discuss with you कि मैंने अभी 3 products आप लोग को दिखाए हैं, and also like all of the things that mentioned. I would just conclude it here कि whatever you have, whatever you're building, just don't build a demo, build a real world problem, solve a real world problem, solve problems for someone. And what if you're building it, build it from the beginning till the end. And it should be production ready. It could be used by real people. अगर आप अपने दोस्त को दे रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर उसको जो भी रिजल्ट्स आ रहे हो, it is making an impact. But yeah, this is like what I wanted to discuss into this session. If you guys have any sort of question, if you guys want to discuss anything, feel free to drop it in the chat. Feel free to unmute yourself and discuss it. But yeah, I hope आप में से इफरा ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था। Okay, yeah, I think I want to answer this question. इफरा का जो क्वेश्चन था, so जो अभी मैं एक घंटे से क्लॉड क्लॉड कर रहा हूँ, चैट जीपीटी कर रहा हूँ, these tools require subscription, but as a student it's very hard for you guys to pay for it. क्योंकि जो एक initial सबकी subscription होती है, it is also like at initial you don't buy $20 के 6-7 हज़ार की subscription है, no one buys it. But if you guys want to build like real world problems, real world products, you would end up spending probably $100 or $200 onto the subscription. But every student cannot do that. I would tell you what I used to do when I cannot afford it. First of all, as a student, all these companies have student programs. You can check to it, Cloud का भी student program है.
गूगल का भी है, गिटहब का भी है। गिटहब का एक स्टूडेंट पैक होता है, वो आई वुड रिकमेंड एवरीवन to use that. It gives you like 50 or 100 products which can help you like very easily to like use any tool for free. उसके अलावा एक, अगर इफ यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, इफ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप, एक गूगल का प्रोग्राम है, गूगल स्टार्टअप प्रोग्राम। व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड अ लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट बनाओ एक, और उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दो। दे गिव यू $25,000 वर्थ ऑफ क्रेडिट्स, क्लाउड क्रेडिट्स जो होते हैं ना, जीसीपी के, गूगल क्लाउड के जो क्रेडिट्स होते हैं वो आपको देता है। उससे आप फ्री में जेमिनी एपीआई यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए उसमें जेमिनी एपीआई से ही जनरेट हो रहा है, और वो मेरी उस प्रोग्राम से जो मिली हुई है वो चल रही है। यू कैन यूज दैट की टू यूज, अगर आप क्लाउड नहीं यूज कर सकते, यू कैन यूज एंटी ग्रेविटी, यू कैन यूज जेमिनी CLI। ओके, अदर देन दैट, लाइक उसके अलावा, I like my product which I am building, Loopless AI. It's a voice AI product. The biggest company in voice AI is 11 Labs. They have a startup program as well. You apply to it, आपको कोई 3-4 करोड़ क्रेडिट्स मिल जाते हैं उनके प्लेटफॉर्म के। सो आपके ना 1-2 साल ना, जो इनिशियल है, लाइक आपके इनिशियल यूजर्स लाने के लिए ना, इन सब स्टार्टअप्स ने बहुत इजी किया हुआ है। यू गाइस जस्ट हैव टू रिसर्च एंड अप्लाई टू दीज प्रोग्राम्स। और वो ये भी नहीं है कि कोई उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू मेक सेंस, यू अप्लाइड एंड देन यू गेट दीज क्रेडिट्स एंड देन यू कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स। आपके जब तक वो क्रेडिट्स खत्म होंगे ना, यू गाइस वुड हैव इनफ पेइंग यूजर्स जिनसे आप फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस ले सको, अफोर्ड कर सकते हो। सही है। आई होप इफ इट आंसर्स योर क्वेश्चन। Perfect. Okay. Okay, another question. Uh, so question is कि there are multiple stages in prototyping और एक production ready application बनाने के लिए, और beta testing भी चाहिए होती है। Audience, okay. So the question is कि आपने product बना लिया, now you want to test it with users. How do you do it? Personally, what I do, I go to Twitter, I go to Reddit, I go to LinkedIn. I find people who might have similar type of problem where, and I just cold DM them, I just cold email them, I just comment। ट्विटर पे जाके ना, कोई भी बंदा कोई और बात कर रहा होगा, मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व होगा, ये प्रोडक्ट यूज करो। और लाइक जस्ट नाइसली आस्क समवन के, जो भी फाउंडर होगा ना, आप उसको बोलो कि यार आई एम अ फेलो फाउंडर, this is my product, please test it, I can test your product, you can test my product, and everyone is so welcoming on these problem, on these platforms. They can help you very well, and this is personally I do। I just go on Reddit, subreddits में बहुत सारे लोग होते हैं, I talk about my product। or there is this concept of building in public। what you can do, you can just keep posting on LinkedIn or Twitter or anywhere that you like, on Instagram, if you have Instagram brand, you can just go there। आप बोलो कि यार मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, पहले दिन आप ये बोलो मैं प्रॉब्लम ये फेस कर रहा हूँ, एंड देन सेकंड डे आप बोलो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, और फिर 2-3 दिन बाद आप उसको पब्लिश कर दो, बोलो कि मैंने सॉल्व कर लिया, लाइक नाउ यू गाइस शुड यूज इट। 2-3 लोग तो यूज कर ही लेंगे उसको। सो यू कैन हैव लाइक अ गुड फीडबैक, एंड just I would recommend you just cold email people। like you guys don't know के like cold emailing is a superpower, you can just email it to anyone, I mean, and they would respond। so yeah, this is personally I do, if anyone has any other question, feel free to ask। उसके अलावा हम इसको रैप कर सकते हैं सेशन को। that was all from my side। if you guys want to connect with me, I'm gonna share my LinkedIn। उसके बाद भी कोई भी आपको questions हो, so feel free to send me a LinkedIn message। और yes, perfect, I think that was all from my
From my side, thanks very much to everyone. Um, yeah, thank you so much, Rahil, for your time and for breaking down that massive shift from it works on my device to it works in production. It was an incredibly practical session, and to our wonderful audience, thank you for your energy and great questions tonight. Keep building, keep shipping, and don't stop at the demo phase. Make sure to follow at IEEE.zu on Instagram and IEEE Ziauddin University on LinkedIn to stay updated on our upcoming events. Have a fantastic night, everyone. Allah Hafiz, and see you at the next Hack the Future session. Thank you, Rahil. Thank you for having me, and thanks to you guys. Thanks for the IEEE team, and best of luck, everyone. Keep building, keep experimenting. और बहुत बहुत शुक्रिया सब इसमें बैठे रहे सेशन में. And thanks for listening me. Bye everyone. Good night. Bye bye. Thank you.